Very good morning, student. This is Indranil Mukherjee. We will start our session within 1 minute. So it's a request to inform all your friends to join the session as soon as possible. Thank you. Well, very good morning to all the participants. Very good morning to the college management of Brahma Valley College of Engineering and Research Institute. Today we gather over here for the orientation for the expert session on digitization, automation, innovation in mechanical and electrical industry, and how to prepare for a high-paying fresher career in core engineering. Thank you, Principal Sir, HOD Sir, Training and Placement Officer of Brahma Valley College of Engineering and Research and Institute for giving us this opportunity to present this session in front of your students. Skill Edge, India's one of the early award-winning vernacular-led skill tech platform,
awarded by IIT Kharagpur in 2020 in their Global Entrepreneurship Summit. This brings us to the next slide. As I have already told, vernacular-led. Vernacular-led means we will train you in Hindi plus English, and your interview preparation will be in English for the high-paying job titles for the fresher as well as working professionals. And that is what we are as a company. We care for your career. Till now, we have delivered over 8,000 plus hours of programs, over 25,000 plus individuals, over 100 plus institutions and university all over India. Few more awards, like we are graduated from TiE Pune Accelerator Program, and also the recognized by CII Pune and recognized by MHRD. Skillage will give you an offline experience in online mode. We focused on knowledge plus practice, plus get in touch with industry veterans, and finally your placement drive. We have in Skillage, we have 3 types of industry mentor: 10 to 12 years of experienced industry mentor, 12 to 15 plus years of experienced industry mentor, and above 20 plus years of experienced industry mentor. Vertical, like we have different training program in core engineering vertical, in technology vertical, and in business management vertical also. In the next slide, these are our founding team and advisory board member. Mr. Rohit Ghosh, CEO and founder of Skillage, 16 plus years of experience in education and in education and management system. Rohit sir has done his BE from Pune University, MTech from Thapar University, and MBA from INSEAD, France. Mr. Shailendra Marathe sir, CFO and also the founder of Skillage, 25 plus years of experience. And sir worked as a CFO Axis, Bajaj Finserv, Deloitte, and by profession sir is a chartered accountant. Mr. Vineet Gupta sir, 24 plus years of experience, director of Jambori Education, founder of Ashoka University, Plaska University. Mr. Suresh Mahalingam sir, 30 plus years of experience, board member of Kellogg, Aviva, and many more group. Mr. Devi Prasad sir, 29 plus years of experience and ex-CHRO of Infosys. Atul Gupta sir, 30 plus years of experience and director of Excel Controlling Cages. It's an controlling cages and manufacturing company, and INSEAD France alumni. It shows what we are doing is being acknowledged by industry veterans and industry people. In our next slide, your today's mentor, your today's speaker, one and only Professor Ashwin Kumar Mahendrakar sir. This gives me an opportunity to introduce you Professor Ashwin Kumar Mahendrakar sir, ME Mechatronics, Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering, MIT School of Engineering, MIT Edith University, Pune. One of our chief mentor of our core engineering vertical, 12 plus years of teaching experience in mechatronics domain with the approach of innovative product development in the domains like mechatronics, robotics, industrial automation, UAV, path planning of robot, and many more patents. Sir's name as an example, a hybrid system with switchover technique for two-wheeler, multifunctioning UCAV for security purposes, innovative drone for digital advertisement, solar multi-panel mounting system for charging batteries, a device for fracture recovery, and many more. So thank you for joining with us. It's a great honor to introduce you to all our students as a chief mentor and today's speaker.
for this induction, for this orientation session. Over to you, Professor Ashwin Kumar Mahendrakar, sir. Yes, thank you. Thank you very much, Indranil sir. Thank you for your introduction, and thank you the vibes giving to the people, those who are listening, because these vibes are required nowadays. Because every important thing is right now. Still, we are in somewhat pandemic, and the online sessions still are going on. So definitely, it has impact. We need the vibes to proceed. So thank you very much for introduction of mine. Uh, Very good morning to one and all the present, future innovative engineers. Why I'm using this word? Because innovation is the future. Everyone wants that, and every industry wants that. Every organization wants that. Every system wants that. Yes, very good morning to one and all. Uh, I just apologize the inconvenience because my camera is not working as far as the laptop is concerned, and I really feel bad about that because I always encourage my students, my aspirants to have, whenever we are in online platform, virtual platform, we need to have the camera, we need to have the body language, we need to see the person who is talking with us. Okay, but I apologize that I tried my best, but the camera is not working. I hope you will consider it. And even if I'm not visible to you, but my voice will recognize who I am and what I am doing in the field of the automation. And I'm going to do very soon so many activities which will be building our nation. And my aim is to contribute little bit for the development of our nation. मेरा एक मानना है कि हर एक बंदा, हर एक इंजीनियर, हर एक इनोवेटर इस कंट्री का ये प्रयास करे कि पूरी अपना जो भी काम कर रहे हैं पूरे दिल से करें, और उससे हमारी पूरी कंट्री को उसका फायदा हो, और कंट्री डेवलपमेंट के लिए उसका निश्चित रूप से फायदा हो, राइट? So that is my intention always, and I always encourage my students to utilize this session to motivate yourself to grow up and make such a work in the field of innovation that it will definitely help for the nation building. Okay, so with this note, I would like to start now. So first of all, before going to start the actual session, I would like to tell you whatever may be the session timing, it may be 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes, okay, whatever it may be. But I will assure you one thing, you will get something value addition in your understanding and your thinking process. Thinking process is very much important to students. And I assure you, there is a value addition in your thinking process, and you will think in different directions. Okay. So let's start. Let's begin with what we are going to do. Can we have next slide, please? Yeah. So what we are going to learn today. हम क्या सीखने वाले हैं, हम आज क्या बातें करने वाले हैं. मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं तो आपको भी थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी, मन में लग रहा होगा कि क्या सीखने वाले हैं हम आज, सर इतना कॉन्फिडेंसली बता रहे हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, हम ये सीखने वाले हैं कि whatever efforts we are taking or the students we are taking, somebody is raising the hands. Pratiksha ma'am or Indranil sir, can you please connect with that person who is raising the hand? If it is by mistake, then we will continue, no issues. Indranil sir and Pratiksha ma'am, please take a look into that. Yeah. तो हम ये आज सीखने वाले हैं कि मुझे जॉब के लिए पढ़ाई करनी है, क्या मुझे करियर सेट करना है. ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती हैं कि मैं सच में सिर्फ जॉब मिलने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे करियर सेट करना है. दिस टू माइंडसेट्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट. ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि न्यू एज टेक्निकल स्किल. हमें टेक्निकल स्किल के साथ, टेक्निकल स्किल तो पढ़ना ही है, एडॉप्ट करना ही है, सीखना ही है, उसके साथ और क्या सीखने की जरूरत है अगर इंडस्ट्री में करियर करना है. रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Indranil sir, can you do the needful, please?
आवाज पार एवढं बोंगालाचं काय ऐकायचं का ऐकायचं मला ऐकायचं आहे ना Indranil sir, Pratiksha ma'am, can you do the needful, please? जग मारायचं 2-3 आल्यानंतर 1 तास झोपलो होतो मी 1 तास मोबाईल पाहिला. I repeat, Indranil sir, Pratiksha ma'am, can you do the needful, please? Okay, so coming to the point, what technical skill you have adopted, what additional technical skills are required, and what kind of technology is expecting in the industry to be going on right now in the industry. We are talking about industry 4.0. So what is required from their side, from industry side, that also we are going to discuss. Then how to build this skill. मुझे पता चल गया कि कौन से स्किल बिल्ड करने हैं, कौन से स्किल की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री में कौन से स्किल की रिक्वायरमेंट है, मुझे अपग्रेड करने के लिए कौन से स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो उसको बिल्ड कैसे करना है, हाउ टू बिल्ड दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. उसके बाद हम बात करेंगे, आई एम गिविंग द डेडिकेटेड सेशन. सेशन के बाद जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हो, राइट. दैट विल बी द लास्ट सेशन एज आस्क मी एनीथिंग एज अ question and answer. Okay, so let us talk about first of all job versus career. Okay. So is this okay? So job versus career. So first of all, I would like to let you know, dear aspirants, dear future innovative engineers, robotics engineers, and automation engineers, what you call as per your requirements, as per your interest. So first of all, make a mindset. I wanted to create or I wanted to develop to set my career. मुझे डेवलप खुद को करना है. क्यों करना है? मुझे करियर सेट करना है. मुझे सिर्फ जॉब नहीं मिलाना. ठीक है, जॉब तो मिल ही जाएगा यार, राइट. मुझे सिर्फ जॉब नहीं मिलाना है, मुझे करियर सेट करना है इन द डोमेन स्पेसिफिक फील्ड जहां पे आपका इंटरेस्ट है, राइट. उसको बोलेंगे हम करियर ओरिएंटेड, और आई एम इंटरेस्टेड इन माय करियर टू सेट माय करियर. ठीक है, तो ये माइंडसेट पहले बनाओ. आई एम हियर टू सेट माय करियर, राइट. नेक्स्ट थिंग इज टेक्निकल स्किल आप ले रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ एडिशनल टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड व्हिच आर नीडेड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट. उसमें क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, मुझे क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा, राइट. करंट अवेयरनेस अडॉप्ट करने पड़ेंगे. इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है राइट नाउ, विच लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज यूटिलाइजिंग. ये भी आपको एज ए टेक्निकल स्किल पता होना चाहिए. पढ़ाई तो आप कर रहे हो, उसके साथ एडवांस स्किल्स और आप बोल सकते हो एडवांस नॉलेज यू शुड हैव इट, राइट. उसके बाद हम थोड़ा सा बिहेवियर स्किल पे भी बात करेंगे. बिहेवियर स्किल भी चाहिए, कैसे बात करनी है. लेट अस से यू हैव डेवलप वन इनोवेटिव प्रोडक्ट, आपने इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है, उसको मार्केट में लॉन्च कैसे करें, उसकी मार्केटिंग कैसे करें. क्योंकि अभी दिस इज द एरा वेयर once you launch any innovative product, it has some duration, it has some durability. उसके आगे आप नहीं जा सकते, उसके पहले आपको लॉन्च करना पड़ेगा. क्योंकि क्या है, लॉन्च करने के बाद कोई नया आ जाएगा, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी और वो लॉन्च कर देंगे. तो उसी टाइम में आपको आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करके वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, ये आपको सब आप करना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा, राइट. ये स्किल सीखने पड़ेगी. ठीक है, उस स्किल के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ट्रेनिंग में ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, राइट. देन हाउ टू बिल्ड दिस स्किल. अभी ये स्किल मुझे मालूम हो गए कौन से स्किल पर क्या स्किल करना है, टेक्निकल स्किल करना है. पहले पढ़ाई करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ आपको टेक्निकल स्किल अडॉप्ट करना है. कौन से टेक्निकल स्किल, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है और मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट से है. ठीक है, वो टेक्निकल स्किल है. उसके बाद बिहेवियर स्किल, उसके बाद आप प्रोफेशनल स्किल बोल सकते हैं, वो भी आपको सीखने पड़ेंगे. ठीक है, ये सारी चीजें कैसे स्किल आप बिल्ड कर पाओगे, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड पर्सन, इनोवेटिव पर्सन, इनोवेटर्स, दोज हु हैव ऑलरेडी वर्किंग इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन, राइट, इनको सुनना पड़ेगा, इनसे ट्रेन होना पड़ेगा, ताकि आप मल्टी फील्ड में, मल्टी डोमेन में आपका एक्सपर्टी बना सको, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सको. ठीक है, तो आपको इनको सुनना होगा, आपको इनसे सीखना होगा, राइट.
तो आपकी ये स्किल बिल्ड हो पाए। ठीक है, try to understand. Okay, now we will start with the some technical points which we are going to discuss, because today we are going to talk about the automation, digitization and innovation. ये तीन चीजें हम बात करने वाले हैं। सबसे ज्यादा मैं गौर करूंगा इनोवेशन पे, which is the need of time. अभी सबसे ज्यादा जरूरत क्या है मार्केट में, तो इनोवेशन की, उस पर हम ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट प्रतीक्षा मैम टू unshare the screen so that I can share my screen. Yes, thank you. Okay, I hope my screen is visible. You can type in the chat box. Dear aspirant, dear students, dear participants, is my screen is visible to you? Yes, okay, thank you. So what we are going to learn today, मैंने आपको आप क्या क्या बातें करनी है ये बताएं, लेकिन मेरा ज्यादा से ज्यादा गौर होगा इनोवेशन पे, क्योंकि इनोवेशन इज द नीड ऑफ आवर। सबसे ज्यादा जरूरत अभी अगर इस पूरे वर्ल्ड में है, पूरे इंडस्ट्री में है, तो वो है इनोवेशन। ठीक है, वो माइंडसेट कैसे आपको पढ़ाना है, माइंडसेट बढ़ाना कैसे है, क्रिएट कैसे करना है, वो भी हम बातें करेंगे। सो दिस आर द कंटेंट ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन। वी आर गोइंग टू सी, बिकॉज हमें इंडस्ट्री में जाना है, इंडस्ट्री में करियर करना है, मुझे जॉब नहीं मिलाना है, मुझे करियर करना है, ये माइंडसेट पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, प्रोडक्शन का मतलब क्या है, वो सीखना है। पीपल आर सेइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन दोनों सेम है। इट्स नॉट एट ऑल द ट्रुथ, इट इज समथिंग डिफरेंट इन द इंडस्ट्री, राइट। उसके बाद डिजिटाइजेशन पे बात करेंगे हम, डिजिटाइजेशन का मतलब क्या है, उसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, हम मैन्युफैक्चरिंग में डिजिटाइजेशन अगर इंक्लूड करेंगे तो स्कोप कहाँ कहाँ पे है, हम कहाँ कहाँ पे इनोवेशन कर सकते हैं, डिजिटाइजेशन कर सकते हैं। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब क्या है, फिर ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग में करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये भी हम बातें करेंगे, राइट। उसके बाद इनोवेशन क्या है, व्हाट इज द इनोवेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेशन, इनोवेटिव थिंकिंग, राइट। देन इनोवेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन के लिए क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ पे आप इनोवेशन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद द लास्ट स्लाइड वेयर आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट इज द स्कोप फॉर इनोवेशन, कौन से फील्ड है, कौन से सारे फील्ड है जहां पे आपको इनोवेशन करने के लिए बहुत सारा स्कोप मिलेगा, चांस मिलेगा, राइट। फ्यूचर स्कोप कहाँ कहाँ पे है वो हम देखने वाले, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विद, राइट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें ये पहले समझ लेना है कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि रॉ मटेरियल अगर आप फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हो, इफ यू आर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, देन इट इज रेफर्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्यों यूज कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा हूँ फिनिश गुड पे, राइट, उसको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद आता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज द, इट इज द स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ मटेरियल इनटू अनदर फॉर्म। उसमें नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हो सकते हैं, राइट। तो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो आउटपुट है फिनिश गुड है, दैट मे बी द रॉ मटेरियल फॉर सेकंड, दैट मे बी द रॉ मटेरियल फॉर थर्ड एंड सो ऑन। तो वो बन गई प्रोडक्शन लाइन, गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए आप इंडस्ट्री में जब जाते हो, देयर इज अ मशीनिंग शॉप, देयर इज अ फैब्रिकेशन शॉप, राइट, देयर इज असेंबली लाइन, राइट, एंड after assembly line or after fabrication there is a paint shop, right, there is a store, there is a purchase department, there is a design department, there is a research and development department, right. All these departments are there. There is a production planning and control, very important, that is PPC department, quality department. All these departments are there in the industry. ये सबको मिला के हम कहते हैं प्रोडक्शन प्लांट, राइट। As far as the production plant is concerned, it is the entire aspect we are considering. So try to understand the difference between manufacturing and production. Okay, getting? उसके बाद हम बात करेंगे डिजिटाइजेशन का मतलब क्या है।
What is digitization, digitalization? What is the meaning of that? Okay. अगर हम कोई भी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में, एक एग्जांपल देता हूं, प्रीवियसली हम यूज करते थे सिंपल सा टेलीफोन, राइट? उसमें हम पूरा रोटेशन में एक रोटेशन दे के नंबर घुमाते थे और उसकी एक टिपिकल वॉइस आती थी, ट्रिंग ट्रिंग काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया, एक पुश बटन वाला लैंडलाइन फोन ला दिया, राइट? तो उसको हम बोलेंगे डिजिटाइजेशन, क्योंकि मैंने पुश बटन का वहां पे यूज किया। आई हैव यूज्ड द पुश बटन ओवर देयर, राइट? And I have represent a physical object with some digital aspect. That's why it is referred as digitization. अभी digitalization कब मैं कहूंगा? जब मैं पूरी प्रोसेस ही इंप्रूव कर रहा हूं। मैंने वहां पे स्विच पुश बटन यूज किए, ऑर्डिनरी टेलीफोन को मैंने पुश बटन ऑपरेटेड लैंडलाइन बना दिया, ठीक है? तो मैं डिजिटल रिप्रेजेंट वहां पे कर रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं। लेकिन अगर मैं पूरी प्रोसेस ही इंप्रूव कर रहा हूं तो उसको हम बोलेंगे डिजिटलाइजेशन, राइट? नेक्स्ट टर्म इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मेरा पूरा बिजनेस एस्पेक्ट ही मैं बदल रहा हूं, पूरा मैं डिजिटलाइजेशन इंप्लीमेंट कर रहा हूं एंटायर मेरे प्रोडक्शन लाइन में और द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यू कैन से, राइट? इन द प्रोडक्शन लाइन इटसेल्फ, द इनटू द प्रोडक्शन सेटअप इटसेल्फ, मैं पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं। मतलब मैं पूरा बिजनेस ओरिएंटेड एस्पेक्ट वहां पे डिजिटलाइजेशन से बदल रहा हूं, तो मैं कहूंगा आई एम डूइंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मैं ये सब सारी चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वी नीड टू मूव टुवर्ड्स फाइनली इंडस्ट्री 4.0, क्योंकि इट्स अ इमर्जिंग एरा, इट्स अ इवोल्यूशन, सॉरी, it's a revolution in the industry, revolution number 4. That's why it is referred as revolution number 4 is referred as industry 4.0. It is the combination of digital transformation with digitalization. मैं digital transformation भी कर रहा हूँ और digitalization भी continuously कर रहा हूँ, improvement कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा it is the use of or it is the actual implementation of digital, or you can say industry 4.0, right? Okay, try to understand the concept. Now this is the simple slide which can tell you what was the past digitization. मैंने आपको example दिया, push button operated लैंडलाइन फोन हमने लिया, उसको स्क्रीन भी थी, राइट? दैट स्क्रीन इज रेफर्ड एज एलसीडी स्क्रीन, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो हम उसको कहेंगे डिजिटाइजेशन, क्योंकि मैंने डिजिटल टेक्नोलॉजी उसमें इंप्लीमेंट की है बस, राइट? अभी प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं? वी आर यूटिलाइजिंग दी स्मार्टफोन्स और टैब, राइट? दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिजिटलाइजेशन। पूरी प्रोसेस ही मैं ऑटोमाइज कर रहा हूं। मैं स्मार्टफोन से मैं चाहे चीजें ऑपरेट कर सकता हूं, मैं चाहे वीडियो कॉल कर सकता हूं, मैं गैजेट्स हैंडल कर सकता हूं, राइट? मैं दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कंपोनेंट्स और मैं रोबोट भी ऑपरेट कर सकता हूं। एक कंट्रोल सिस्टम मैंने जो बनाई है, जो मेरे घर पे है, उसको मैं डिजिटली कंट्रोल कर सकता हूं मेरे स्मार्टफोन से। सो दिस इज डिजिटलाइजेशन, राइट? एंड व्हाट इज द फ्यूचर? फ्यूचर इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसपे हम डिजिटलाइजेशन पूरा करेंगे, राइट? और डिजिटलाइजेशन भी करेंगे, डिजिटाइजेशन भी बनाएंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे टेक्निक्स, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ योर इंडस्ट्री 4.0। गेटिंग? नाउ अगर ये मुझे डिजिटाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग में इंप्लीमेंट करना है तो कहां कहां में स्कोप है, कहां मैं कर सकता हूं? व्हाट आर द वेरियस स्कोप्स वेयर आई कैन डू दैट डिजिटाइजेशन? इन डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट डिजाइन करना है, मैं सॉफ्टवेयर का यूज कर सकता हूं। पहले मैं फ्री हैंड स्केचेस करूंगा, पहले मैं मेरी जो भी आइडिया है माइंड में उसको पेपर में लाऊंगा, जस्ट फ्री हैंड स्केचेस, यस मुझे ये सिस्टम बनानी है। वंस आई कंक्लूड दिस इज द काइंड ऑफ सिस्टम, देन आई विल गो फॉर वन 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। उसमें मैं मॉडल बनाऊंगा, उसका एनालिसिस करूंगा, उसका सिमुलेशन करूंगा, ऑब्जर्व करूंगा मेरा कंपोनेंट एज पर माय एक्सपेक्टेशन बन रहा है कि नहीं, राइट? ये क्या है? इट इज डिजिटाइजेशन। मैं डिजिटल प्रोसेसेस और डिजिटल इक्विपमेंट्स का यूटिलाइजेशन कर रहा हूं वहां पे टू मेक इट डिजिटाइजेशन। गेटिंग? तो यहाँ पे एक स्कोप है। उसके बाद फैब्रिकेशन प्रोसेस यूज टू डेवलप द प्रोडक्ट, ठीक है? हम पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, प्रोडक्शन में जो भी फैब्रिकेशन प्रोसेसेस यूज करते हैं, इन दैट फैब्रिकेशन प्रोसेस कैन all the participants are requested to mute yourself please. क्या होता है, सराउंडिंग नॉइस से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ओके, थैंक यू। राइट? सो
डिजिटाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ कहाँ पे हम डिजिटाइजेशन कर सकते हैं? प्रोडक्ट डिजाइन में कर सकते हैं, उसके बाद फैब्रिकेशन प्रोसेसेस है, व्हाट आर फैब्रिकेशन प्रोसेसेस वी हैव। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड फैब्रिकेशन प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग में हम कटिंग कर रहे हैं, हम कंपोनेंट को कट कर रहे हैं, हम कंपोनेंट को रीशेप कर रहे हैं, राइट। फैब्रिकेशन में इट मे बी जॉइनिंग प्रोसेस, जस्ट लाइक एग्जांपल, फेमस एग्जांपल इज वेल्डिंग। तो वेल्डिंग करने के लिए आई कैन इंप्लीमेंट रोबोट ओवर देयर, आई कैन इंप्लीमेंट ऑटोमाइजेशन ओवर देयर। तो मैं ये कैसे करूंगा? डिजिटाइजेशन का इंप्लीमेंट करके। सो फैब्रिकेशन में भी मैं डिजिटाइजेशन कर सकता हूँ। देन टू प्रोवाइड द सर्विस, मुझे प्रोडक्ट को सर्विस देनी है। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मैंने सेल कर दिया, कस्टमर का एक रिक्वायरमेंट आ गया कि इसको भाई आपने जो भी दिया है उसमें ये थोड़ा सा इश्यू आ गया है, इसको सॉर्ट आउट करो। तो आई हैव दिस सर्विस आल्सो इन द डिजिटाइजेशन फॉर्मेट। Take the example of today's example of app, the latest app development. Yes, आप ऐसे भी आप दे सकते हो कि घर में आके आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। आपका एसी खराब हुआ है तो घर में आके आप ऐप पे बुक कर सकते हो, बंदा आएगा, आपका एसी रिपेयर करेगा, चला जाएगा, राइट। ओके, देयर आर सर्टेन companies or organization, they have created this platform. What is this? This is digitization only to provide the service. तो इंडस्ट्री में भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए डिजिटाइजेशन हम कर सकते हैं। कस्टमर से फीडबैक आ गया, ओके, थ्रू द स्मार्टफोन वी हैव रिसीव्ड इट एंड इमीडिएटली वी हैव सेंड द पर्सन टू डू दैट करेक्शन, राइट। तो हम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी हम डिजिटाइजेशन का यूज कर सकते हैं, राइट। आई विल गिव द टिपिकल एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ ओला ऐप, कैब सर्विस, राइट, उबर ऐप यू कैन से। उसमें क्या है, आपको फैसिलिटी दी जा रही है, जहां पे आप खड़े हो वहां पे आप कैब कॉल्स कर सकते हो, आपके नजदीक कैब आ जाएगी, आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सो दिस इज द डिजिटाइजेशन इन दैट प्रोसेस। ओके, हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ फ्लिपकार्ट और योर अमेजॉन ई कॉमर्स। वहां पे हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, हम ऑर्डर ट्रैक भी कर रहे हैं, मुझे पता है अभी ऑर्डर पूरी हुई है क्या, डिलीवरी पूरी होने वाली है क्या, पैकिंग हुआ है क्या, डिस्पैच हुआ है क्या, डिलीवरी मेरी कब तक एक्सपेक्टेड है, ये मैं सब ट्रैक कर सकता हूँ। कैसे कर रहा हूँ मैं? जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ नीड ऑफ आर। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी हम डिजिटाइजेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा स्कोप है, राइट। उसके बाद हम जाएंगे ऑटोमेशन। अब ये हो गई बातें डिजिटाइजेशन। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस पड़ेगी। भाई बंद कर लो रे। व्हाट इज डिजिटाइजेशन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इट, हाउ टू इंप्लीमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमने देखा। अभी हम दूसरा एक वर्टिकल देखने वाले हैं। पहला वर्टिकल हमने देखा डिजिटाइजेशन का, दूसरा वर्टिकल हम देख रहे हैं ऑटोमेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखना होगा कि व्हाट इज ऑटोमेशन, ठीक है। इट द ओरिजिन इज, इट्स अ ग्रीक वर्ड एटोमेटोस। इसका मतलब ये होता है कि सेल्फ एक्टिव, वहां से वो इन्वेंट हुआ है एंड देन इट हैज बीन स्टार्टेड एज ऑटोमेशन। ओके, एक ये प्रोसेस है जिसमें इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं कि व्हाटएवर प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर देयर, ओके, कन्वर्टेड प्रोसेसेस हैं जिसमें हम मैनुअल प्रोसेस को हम ऑटोमेटेड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ऑटोमेटेड करते टाइम हम जो भी मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं और पहले मैकेनाइज्ड था उसको हम ऑटोमेटेड बना रहे हैं, वो बनाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के लिए भी जो भी इक्विपमेंट लगते हैं और ये एंटायर प्रोसेस जब हम इंप्लीमेंट करेंगे उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इज द प्रोसेस इन द इंडस्ट्री वेयर वेरियस प्रोडक्शन ऑपरेशंस आर कन्वर्टेड फ्रॉम मैनुअल प्रोसेस टू ऑटोमेटेड और मैकेनाइज्ड प्रोसेस, ठीक है। दिस इज सिंपल ऑटोमेशन, ठीक है। अभी व्हाई टू गो फॉर ऑटोमेशन, आप बोलोगे सर ठीक है ऑटोमेशन की बात आप कर रहे हैं, लेकिन क्यों करना है ऑटोमेशन, जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑटोमेशन, व्हाट इज, कैसा है, कोई भी चीज करते टाइम हमें उसकी पहले नीड पता होनी चाहिए, व्हाट इज नीड, ठीक है। इफ यू कंपेयर विद द यूरोपियन कंट्रीज, आर कंट्री विद यूरोपियन कंट्रीज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पे ये है कि शॉर्टेज ऑफ लेबर। अपने यहाँ पे मैन पावर अवेलेबल है लेकिन उनके यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर बहुत है, सो दे इमीडिएटली गो फॉर ऑटोमेशन, क्योंकि लेबर ही नहीं है तो ऑटोमेशन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट रीजन इज हाई कॉस्ट ऑफ लेबर। कभी कुछ एरिया में ऐसे हैं, कभी कुछ कंट्री में ऐसे भी हैं कि लेबर अवेलेबल है बट दे आर मच कॉस्टली। तो हाई कॉस्ट ऑफ लेबर के वजह इंडस्ट्री चूज करेगी कि मैं ऑटोमेशन करूंगा, ऑटोमेशन करते हैं, चलो वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं सो दैट माय प्रोडक्टिविटी विल बी गेटिंग इंप्रूव्ड, मेरे प्रोडक्ट फटाफट बन जाएंगे, राइट। सो हाई कॉस्ट ऑफ लेबर आल्सो।
That is one more reason for going for automation. Next is increased productivity. मुझे productivity increase करनी है, सबको productivity increase करनी है, right? Every industry want to improve their productivity. तो उसके लिए हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, तो उसकी जरूरत वहां पे भी क्या पड़ेगी, आपको ऑटोमेशन करना पड़ेगा। कम से कम टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा हूँ। समझो आपकी एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आप कंपोनेंट्स बना रहे हो, आपका एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, आपका 3 शिफ्ट में काम चलता है। एक शिफ्ट में आप 10 कंपोनेंट बनाते हो, 3 शिफ्ट में हो गए 30 कंपोनेंट, मतलब डेली का आपका कैपेसिटी है 24 आवर्स का 30 कंपोनेंट्स। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये आपका प्रोडक्शन रेट है कि 30 कंपोनेंट्स आप बना रहे हैं। चाहे वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग करके, एंटायर प्रोडक्शन लाइन यूज करके, उसका पूरा फैब्रिकेशन होके, पेंट होके, असेंबली बन के रेडी हो रहा है कंपोनेंट, ऐसे आप 30 कंपोनेंट्स बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, आप 30 से ज्यादा नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट? आप इमीडिएटली इंडस्ट्री तो नहीं बढ़ा सकते, तो आप अपने प्रोसेस को एटोमाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका 30 प्रोडक्ट डेली का आपका कैपेसिटी है 30 प्रोडक्ट, 30 से 35 जा सकता है, राइट? 35 से 40 जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, व्हाट इज द नीड, okay, what is the requirement, you have to atomize, that is the need of automation, right? Getting my point? Next is competition. Next reason is competition. और एक रीजन है ऑटोमेशन की तरफ जाने के लिए, competition. There is a huge competition in the market. If you take the example of four-wheeler manufacturer, you can just take a name, the name is going beyond 10, beyond 20 also, as far as the four-wheeler manufacturers are concerned, right? ओके, मैं भी बातें करने लगा तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट Honda, you can talk about Suzuki, you can talk about Tata Motors, you can talk about Mahindra, you can talk about Volkswagen, you can talk about the SML, right? You can talk about Isuzu, right? You can talk about the various organizations from Japan, especially Toyota is there, Suzuki is there, Honda is there, right? Like in General Motors is there, Mercedes Benz is there, all these are the manufacturer, leading manufacturing in the world. तो इनकी कंपटीशन चल रही है, कौन कौन सा मॉडल जल्दी लॉन्च करेगा, कौन नए नए फीचर्स देगा, राइट? तो ये कंपटीशन को बीट करना है आपको, अगर मार्केट में सस्टेन करना है तो आपको ऑटोमेशन करना ही पड़ेगा। दिस इज द नेसेसिटी ऑफ ऑटोमेशन। नेक्स्ट इज सेफ्टी। ठीक है, मैं कंपटीशन को बीट कर रहा हूं, मैं सब कुछ बना रहा हूं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में और एंटायर प्रोडक्शन लाइन में मैं देख रहा हूँ सेफ्टी को भी प्रायोरिटी मेरी देनी पड़ेगी। अगर मैं सेफ्टी को प्रायोरिटी दे रहा हूँ तो मुझे वहां पे भी ऑटोमेशन करना पड़ेगा। राइट नाउ इट इज ट्रेमेंडस रिक्वायरमेंट इज सेफ्टी ओनली, बिकॉज in this pandemic we have learned so many things and we are giving the priority to the safety. Safety is first, जान है तो जहान है, right? So that is the thing now we are experiencing a lot, right? So that is the safety feature. Then we have reducing the manufacturing lead time. Okay, Pratiksha ma'am and Indranil sir, if you are there, please instruct the participants to don't use the whiteboard. They are doing something, they are creating the lines and lines on the screen. It may hamper the presentation because some participants are listening very carefully. I am observing. But if they are doing this, this creates the chaos and they disturb the presentation and the link is getting break. Please take care of these things, please. Okay. Students, please listen carefully and it's a very serious session. अगर आपको सीरियसली नहीं पढ़ना है, नहीं सुनना है तो आप लीव कर सकते हो, बट ऐसे कुछ चीजें करके आप डिस्टर्ब मत करो सेशन को। बाकी स्टूडेंट्स और सर की लिंक भी फिर डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो अगर सुनना है तो आप सीरियसली सुनो। अगर आपको कुछ ऐसे जो अभी आप ड्रॉ कर रहे हो या जो यूज कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ करना है तो आप लीव करके जो भी आपका टाइम पास है वो करो। ये बहुत सीरियस सेशन है, सब बहुत बच्चे भी सीरियसली ये सुन रहे हैं, तो ये सेशन कंटिन्यू करने दो। ठीक है, ओके सर, यू कैन कंटिन्यू। Yeah, thank you ma'am. So dear participants, please, those who are really serious, those who are really wanted to set their career, जिसको सच में करियर सेट करना है, आप ये, मैं इतना तो श्योर
हूँ, इतना तो आपको कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद थोड़ा सा आप वेकअप हो जाओगे, थोड़ा सा आपका माइंड ओपन हो जाएगा, यू विल गेट मच इनसाइट, यू विल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा सा सोचना चालू करोगे, क्योंकि आपको करियर सेट करना है। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, कैजुअल अप्रोच से कुछ होगा नहीं। ओके, लेट इट बी। सो नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग द मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। ध्यान में रखना है, इंडस्ट्री वट एवर मे बी, यू गिव मी द नेम ऑफ इंडस्ट्री, आई विल टेल यू द two important aspect every industry is following is, number one is, every industry is trying to reduce the manufacturing cost and to increase the production rate to get more profit, means to minimize the cost to maximize the profit. ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हर एक इंडस्ट्री करती है, कोई चाहे ऑटोमेशन करो, चाहे सेमी ऑटोमेशन करने दो, चाहे कोई नए नए प्लांट्स डालने दो, मल्टीपल प्लांट्स करने दो, एम यही रहेगा इंडस्ट्री का, टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और टू मिनिमाइज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इट्स अ बिजनेस, everyone want that business, so to maximize the profit everyone trying to do that, right? So this is the most important aspect. तो ये दो चीजों पे इंडस्ट्री काम करती है सबसे ज्यादा, कोई भी इंडस्ट्री में सबको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम ही करना है, प्रॉफिट बढ़ाना ही बढ़ाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है ऑटोमेशन करने की, राइट? अभी ये ऑटोमेशन मैं मैन्युफैक्चरिंग में अगर डालूंगा, समझो आई वांटेड टू इंप्लीमेंट दिस ऑटोमेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग, वेयर इज द स्कोप? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? मैंने ऑलरेडी बताया, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इंडस्ट्री, एट द सेम टाइम टू रिड्यूस द कॉस्ट, मैंने आपको बताया, टू मिनिमाइज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा? when you are talking about the production rate, when you are talking about the productivity, when you are improving the productivity, of course indirectly you are going to talking about the profit increment, you are talking about the profit itself as per your organization is concerned, right? So that is the objective. What is the example? Process control automation you may talk about, robotic process automation you may talk about, use of modern material handling systems. Take the example of the Flipkart as well as Amazon. If you see their packaging, if you see the in which box it is coming, cartoon kind of thing, packaging kind of thing, you will get happy. अरे भाई कितना अच्छी तरीके से पैक किया है, right? लेकिन आपने देखा होगा, अगर आप देखोगे तो उनके वेयर हाउस में they are utilizing much modern material handling systems which are handling with care. क्या होता है, सब बॉक्सेस फ्लो हो रहे हैं, वहां पे उनको सेग्रीगेट करना है, सॉर्ट करना है, उसकी केयर भी लेनी है, तो वहां पे वो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम यूज करते हैं, मॉडर्न मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स इन द वेयर हाउस, इन देयर वेयर हाउस। यू मे टॉक अबाउट the various supermarkets, you may talk about the big marts, Walmarts, right? Then you may talk about the just like sector, various sector, like you may take about the DMart example or Big Bazaar. If you see their warehouse, there also they have much automation and they have utilized maximum cases, they are utilizing the material handling systems. Okay, because material handling takes much time if you do it manually. And if we implement the modern material handling tools, equipments, then definitely you are reducing the time. Once you reduce the time, you are increasing the production rate. Getting? Or you are saving the time, means you are saving the money itself as far as the industry point of view. Okay, तो सबसे ज्यादा गौर करना है कि मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम बहुत सारे यूज होते हैं अगर आपको ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पे करना है, राइट? अगर आप रोबोटिक प्रोसेस को ऑटोमाइज कर रहे हैं, एक प्रोसेस है, उसमें मैंने नंबर ऑफ रोबोट इंप्लीमेंट किए हैं, इंडिविजुअल रोबोट हैज इट्स ओन कन्वीनियंट जोन, इट हैज इट्स ओन कन्वीनियंट एक्टिविटी टू बी डन, वो एक्टिविटी कर भी रहा है, लेकिन जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ उसको भी मैं एंटायर प्रोसेस को भी ऑटोमाइज कर सकता हूँ, राइट? सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। ये हो गया सेकंड वर्टिकल। पहला वर्टिकल क्या हमने देखा? डिजिटाइजेशन। दूसरा वर्टिकल क्या है? ऑटोमेशन। अभी तीसरे वर्टिकल पे हम जाने वाले हैं, दैट इज इनोवेशन। बिफोर proceeding towards innovation, we need to have the innovative thinking first of all. Innovative mindset has to be there, right? To think out of the box. मुझे आउट ऑफ द बॉक्स क्यों सोचना है? क्योंकि मुझे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट? सी, इफ यू बिल्ड दिस काइंड ऑफ capability in you, thinking in you, definitely believe in me, you will have more scope in the industry.
or you, if somebody is wanted to become an entrepreneur, somebody wanted to have their own startup, then you have to spread, or you have to have the innovative mindset, innovative thinking. You have to increase the innovative thinking. ठीक ठीक है. इसमें होता क्या है, हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है. प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, अलग अलग तरीके से सोचना है, उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द बॉक्स. ठीक है. उसके बाद अगर मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट भी करना है, जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है, उसके सॉल्यूशन मुझे फाइंड आउट करने हैं. सो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से मुझे सोचना पड़ेगा. अगर आपको सच में इनोवेटिव थिंकिंग बढ़ानी है, if you really wanted to improve the innovative thinking, then we need to highlight, or we need to have focus on three important things. Number one, latest technologies. You should know the latest technologies. You should aware about latest technologies which are used in the industry, which are used in the premises, which are used in the market. Innovative थिंकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद मार्केट कंडीशन पता होनी चाहिए. व्हाट इज मार्केट कंडीशन, विच इज नाउअडेज अनसर्टन. सब कुछ अनसर्टन है भाई. ठीक है. तो मार्केट कंडीशन क्या चल रही है, अप एंड डाउन क्या हो रहे हैं, मार्केट कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए. एट द सेम टाइम, व्हाट आर द वेरियस बिजनेस मॉडल्स which are going on in the industry, which are going on in the market, which are going on in the cities, in the metro cities. ये सारी चीजें आप इंटीग्रेट करोगे तो आप अभी इसी वक्त, मैं बोल सकता हूं, और अभी इस एरा, इन दिस 21st सेंचुरी, आपको जो इनोवेटिव माइंडसेट चाहिए वो आप बना सकते हो अगर आप ये तीन ही चीजों का इंटीग्रेट करोगे. अगर आप ये तीनों चीजें, whatever three things I am telling, if you combine all these three things, integrate each other, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो आपका जो इनोवेटिव माइंडसेट बनेगा वो 21st सेंचुरी को रिक्वायर्ड होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. उसके बाद हम बात करेंगे, ये होगी बात इनोवेशन, इनोवेटिव थिंकिंग. अभी हम बात करेंगे इनोवेशन. व्हाट इज इनोवेशन? ये इनोवेशन जो करना है, मुझे इनोवेशन करना है मतलब क्या है, जो चीजें ऑलरेडी बनी हुई है उसमें मुझे मॉडिफिकेशन करने हैं, ऐसे करने हैं सो दैट इट्स कैपेबिलिटी विल गोज ऑन इंक्रीज, राइट, इट्स स्टेबिलिटी गोज ऑन इंक्रीज. ठीक. उसको हम बोलेंगे इनोवेशन. राइट. वो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में भी करना है तो कहाँ कहाँ पे स्कोप है. प्रोडक्ट डिजाइन में आप इनोवेशन कर सकते हो. अरे भाई, इनोवेशन को तो कहाँ पे भी जाओ, आई विल टेल यू, एवरीवेयर देयर इज अ स्कोप फॉर इनोवेशन. जो इनोवेटिव माइंडसेट बनाएगा उसको जहां जाओ वहां स्कोप. You may talk about manufacturing industry, you may talk about the automotive industry, you may talk about cement industry, you may talk about sugar plants, sugar industries, you may talk about chemical industries, you may talk about pharmaceutical industries, you may talk about food industries, you may talk about packaging industries. Wherever you go, there is a scope for innovation. तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप ले लो, जहां पे पूरा प्रोडक्शन जो चल रहा है उसमें हर एक स्टेप में आपको स्कोप मिलेगा इनोवेशन करने के लिए. ठीक. अब ये इनोवेशन क्यों करना है? ठीक है. आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सर आप इनोवेशन की बात इतनी कर रहे हो, समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों करना है? राइट. टू मीट द डिमांड फ्रॉम द कस्टमर. मेरे कस्टमर की जो डिमांड है वो फुलफिल करने के लिए मुझे इनोवेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर की डिमांड बढ़ती जा रही है. आजकल तो आप देखो मार्केट में फीचर्स बहुत आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं? बिकॉज इंडस्ट्री एज फार एज द कस्टमर in the market is needed, that they need the latest features. ठीक है. आप अभी WhatsApp की बात ले लो, Facebook की बात ले लो, अपडेट्स आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सबको अपडेटेड डेटा चाहिए, अपडेटेड स्किल चाहिए, अपडेटेड फीचर्स चाहिए. राइट. यू नीड अपडेट एवरी डे, यू नीड अपडेट एवरी पीरियडिकल टाइम. राइट. तो कस्टमर की डिमांड फुलफिल करनी हो तो आपको इनोवेशन करना ही पड़ेगा. सीधी सी बात है. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ Kia Motors. You might have observed Kia Motors has launched Sonet as a one vehicle and Seltos as a second vehicle. If you see in the market, they are booming and they are getting much publicity just because they have adopted latest features. उन्होंने IoT implement किया है, voice controlled, right? Voice control command. They have implemented and they grab the opportunity in the market to capture the market through the customers. वो customer grab भी कर रहे हैं. क्यों? उन्होंने innovation कर दिया. Right? This is the example. This is the best suitable example where you can see what is the need of innovation. ठीक है. To meet the demand from the customer, आपको innovation करना ही पड़ेगा. To achieve the best in the competitive market. मैंने कहा कि competition market है, कोई भी product ले लो उसका competition बहुत high level पे है market में.
तो उसमें बेस्ट अचीव अगर आपको करना है तो आपको इनोवेशन करना ही पड़ेगा, राइट? दैट इज द नीड ऑफ इनोवेशन, दैट इज द नीड व्हाई टू गो फॉर इनोवेशन। इसका रीजन आपको चाहिए, तो दीज आर द रीजन। उसके बाद तो जो द गुड रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स एंड विद द कस्टमर्स, कस्टमर से गुड रिलेशन करना है, राइट? आपका जो भी सप्लायर है, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आप एक असेंबली लाइन आप डेवलप कर रहे हो, आपके वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, तो आप सब आपके सप्लायर विद इन टाइम आपको प्रोडक्ट, उनके जो सब कंपोनेंट आपको लगने वाले हैं असेंबली के लिए, वो आपको सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आपको अच्छा रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? टू अचीव दैट रिलेशन आल्सो वी नीड द इनोवेटिव माइंडसेट अगेन, राइट? दिस इज द नीड ऑफ इनोवेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके? एट द सेम टाइम वी नीड टू फाइंड आउट द स्कोप आल्सो। मैंने तो आपको बता ही दिया है, लेकिन वन मोर स्लाइड इज देयर वेयर वी हैव द मच स्कोप। आप एम्प्लॉय की साइड ले लो, आप कस्टमर के साइड से बात करो, आप पार्टनरशिप की साइड से बात करो, आप कंपटीशन की बात करो, पब्लिक सेक्टर की बात करो, हर एक सेक्टर में आपको इनोवेशन के लिए स्कोप है। नाउ आस्किंग अबाउट टेक्निकल फील्ड वेयर वी हैव द स्कोप, राइट? इफ यू सी दिस स्लाइड, wherever you go there is a scope for innovation. If you go for industry 4.0 there is a huge scope for innovation. हर एक स्टेप में आप इनोवेशन कर सकते हैं। You may go for automotive industries, I have already informed, सब लोग इनोवेशन ही कर रहे हैं। Take the example of MG. MG Hector is the SUV which is getting much popular nowadays again because they have adopted latest features. उसमें बहुत सारे लेटेस्ट फीचर उन्होंने इंप्लीमेंट किए हैं। तो आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी जाओगे तो इनोवेशन के लिए बहुत स्कोप है। एरोस्पेस, आपने देखा होगा मिशन मंगल, we are the first and it's a proud moment for us, we are the first country who has launched in first attempt, right? As far as mission mangal is concerned, we have launched that in first attempt, so it's a proud moment. तो aerospace में जाओगे, space technology में जाओगे तो बहुत स्कोप है इनोवेशन के लिए। at the same time biomedical, राइट? बायोमेडिकल फील्ड में भी अभी आप पैंडेमिक में ही ले लो, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई, हमें जो पता भी नहीं था वो सब कुछ चीजें अभी आ रही हैं। क्यों? ये इनोवेशन की इनोवेशन हो रहा है, इसलिए ये सब चीजें बायोमेडिकल में भी हो रही है। देन देयर इज अ नीड इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आल्सो। अभी फूड को मुझे प्रोसेस करना है, स्टेप बाय स्टेप उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस करने हैं, तो मुझे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इनोवेशन करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप इनोवेशन करना पड़ेगा। अभी इट्स एरा ऑफ दी हाइजीन फूड, सबको हाइजीन फूड चाहिए, सो आपका पैकेजिंग ही ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर जो भी आपने फूड रखा है इट शुड हैव दैट ड्यूरेबिलिटी, उसका जो भी एक्सपायरी डेट है तब तक उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, तो आपको उसको प्रोसेस करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, तो वहां पे इनोवेशन के लिए बहुत स्कोप है। देन डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, आप जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन यूज कर रहे हैं, अगर प्रीवियसली आप देखोगे, प्रीवियसली हम जो भी मेजरमेंट डिवाइसेस यूज करते थे हम खुद मेजरमेंट करते थे, उसमें थोड़े से मैन्युअल एरर आते थे, राइट? ह्यूमन एरर हम बोलते हैं। लेकिन अभी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन आ गए हैं, आप जो भी इंस्ट्रूमेंट लेते हो उस पर डिजिटल डिस्प्ले है, आपको डायरेक्ट वैल्यू दिख जाती है, राइट? तो वहां पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन में तो बहुत स्कोप है, राइट? नेक्स्ट थिंग इज स्मार्ट फार्मिंग। एज फार एज फार्मिंग सेक्टर इज कंसर्न, यू मे टॉक अबाउट एग्रीकल्चरल फील्ड। If you talk about agricultural field, there we have much scope in innovation. Step में यार, if you talk about the farming condition, farming situation, or the required growth in the farming sector, agriculture sector, our country itself is an agricultural country, right? We have the scope individually, step by step, if you really wanted to do the innovation. Okay, if you go in the farming, it may be starting from cropping stage, it may be fertilization, whatever steps we have, in that every step there is a scope for innovation. आप innovation वहां पे कर सकते हो। इनोवेशन करना है मतलब क्या करना है, जो हम चीजें कर रहे हैं, जो भी हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसको मॉडिफाई करना है, सो दैट दैट प्रोसेस विल बी गेटिंग मच एडवांस एंड गिव मच एडवांटेजेस, और विद इन टाइम वो हो जाए बस, ठीक है? तो स्मार्ट फार्मिंग, एग्रीकल्चर फील्ड भी बहुत सारा स्कोप है इनोवेशन करने, राइट? देन वी हैव पैकेजिंग इंडस्ट्री, मैंने अभी बात करी आपको, राइट? In case of packaging industry also, now you may see the packaging of different manufacturers. You may talk about the food, you may talk, I will give the typical example, take the example of Haldiram, take the example of Balaji Foods, take the example of Lay's, right? So if you see their packets, they're trying to grab their customer with the attractive packets. Okay? तो ये बनाने के लिए you need the packaging industries, right?
They can have their solution, individual solution to develop the packages. Okay, so these, wherever you go, I have tried my best to cover all the sectors, but you may talk more sectors. Okay, wherever you go, there is a scope for innovation. Always keep in mind. And innovation is the need of future. It's a need of time. Those who really wanted to do their career in the field of technology, try to improve your innovative mindset. You will have a better future, right? This is the need of art. And at last but not the least, some projects. These are the projects which we have done. Humanoid robot. This is the machine. We have made the combination of temperature screening and hand sanitization. Both processes we have combined. This is the machine. And this is the robot we are going to develop. We are going to launch very soon. This is the healthcare robot, which is taking care of all the things, right? Which is taking care about your oxygen measurement, oxygen level measurement, your temperature measurement, right? Your the hand sanitization. You have here the mask or not. Everything will be taken care. This robot we are going to develop very soon. So these are some innovative projects. Okay. At last, but not the least, this is the word. This is the innovative Thank you. statement. Samlade. Yeah. Yeah. So this is the statement which is written by me itself. And I, being a motivational speaker, I always try to use this word, use this statement, various motivational quotes. Out of that, very famous is, if you really wanted to become an innovator, so keep in mind this line always. Be a good listener and observer to become a future innovator. Right? If you really wanted to become a future innovator, you have to become, first of all, good listener and good observer. Right? I will give the typical example. Scientist Newton, scientist Thomas Edison, they have taken the motivation from the nature itself. How? They have listened to the nature carefully, and they have observed the nature carefully, and they have done the invention in the field of technology. Right? And if you really wanted to become a future innovator, then you should be a good listener and good observer. Okay, so this is the kind of motivation from my side. I hope you like this session. I hope there is value addition from this session, definitely, and you will get the opportunity to have the training, more and more training, this kind of training which is required for your own growth. If you really wanted to set your career, definitely take the advantage of this. Okay, so I believe in creative thinking, and I'm a passionate counselor, also motivator also. So this is the statement, which is the last statement of our session. So I would like to conclude from my side. If you have any questions, you can definitely ask using the chat box or using the, you can unmute yourself, you can ask the question, whatever you have. Okay. So that is from my side. And thank you very much for your patience listening. Over to you, Pratiksha ma'am. Okay, thank you, sir. Thank you for such a wonderful and interactive session. Thank you so much. Students, अभी आपको कोई भी questions है regarding this digitization, automation or innovation, you can ask to sir. You can type on chat box. Otherwise, you can unmute yourself and directly talk with sir. It's a great opportunity for you that आपको ये संधि मिल रही है कि आप सर के साथ बातचीत कर सकते हो, सर के साथ आप आपके डाउट शेयर कर सकते हो. तो कोई भी आपको अगर डाउट है अबाउट दिस तो आप टाइप कर सकते हो या सर के साथ शेयर कर सकते हो. हम 5 मिनट वेट करेंगे. अगर कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो. Students, you can type on chat box also. Sir will answer you for your question. अगर कोई भी क्वेश्चन है थिंक करो. अगर आपको आपके करियर के बारे में जानना है, अभी आप डिप्लोमा मतलब अगर आप पॉलिटेक्निक में हो, लास्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है आफ्टर डिप्लोमा क्या करना है, कैसा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है करियर में, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप वो भी सर के साथ डिस्कस कर सकते हो. ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिला है आपको. If any question? Yeah, so you may, yes, chat box, no, ma'am. Okay, okay, thank you.
You can put a message in the chat box that Yes, Sham, you want to talk anything? yeah, Yeah, somebody's Sanjay. talking supply. Shampat. Yeah, somebody's talking about supply. Yeah, somebody has shared the message in the chat box. Yeah, I got to know that supply chain. So you may, your question may be related to what is the scope of innovation in the field of supply chain, right? Ma'am, के बाद क्या कर सकते हैं? Yes, you will receive the feedback link. Don't worry. In that feedback link also, you can make the comments. You can have the discussion also. So let us Sir, talk about that question. Somebody is talking about supply chain. So supply chain and logistic is the field where again you have much scope for innovation. How you are going to make the supply chain? If suppose product has to be reached within your city, let us say in city we have certain locations. You have one master location and you have one sub locations. Let us say there are 20 locations in the city and your requirement is within one day all the components should reach to that. In that case, you have much scope to do the innovation. And this is called the supply chain management. In that supply chain management, you need to have, again, you can utilize your own innovative mindset. आप खुद का इनोवेटिव माइंडसेट यूज कर सकते हो इनोवेटिव थोड़े से आइडिया लगा के ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं कैसे कम से कम टाइम में उसकी डिलीवरी वहां पे पहुंचनी चाहिए उसका प्रोडक्ट वहां पे पहुंचना चाहिए डेफिनेटली यू हैव ह्यूज स्कोप ओवर देयर आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन सर आई थिंक वो एक क्वेश्चन था कि आईटीआई के बाद क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था. यस अगर आपने आईटीआई किया है समझो आईटीआई किया है एंड इन ब्रैकेट आई कैन मेंशन अगर डिटेल में किया है थरली किया हो सच में तो उसमें एक स्कोप आपको मिल सकता है कि आप आईटीआई के बाद इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ले सकते हो उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि ट्रेनिंग सेशन करके आपके जो भी आप ट्रेनिंग सेशन लोगे वट एवर ट्रेनिंग सेशन यू आर कंडक्टिंग उसमें भी आपके स्किल आप इंप्रूव कर सकते हो इफ यू इंप्रूव योर स्किल डेफिनेटली यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज राइट तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने ही वाली लेकिन थोड़े से टेक्निकल स्किल अडॉप्ट करने पड़ेंगे उसके बाद आपको थोड़े से प्रोफेशनल स्किल भी अडॉप्ट करने पड़ेंगे फॉर दैट पर्पज यू नीड सम काइंड ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेनिंग राइट once you do that you will definitely get the more opportunities very good question next is what about SAP after mechanical engineering yes very good question again see SAP is again related to the technologies which is where we are talking about ERP enterprise resource planning and that is merging field again everywhere we need that also if you talk about ERP if you talk about SAP there are the certain organizations which providing the training especially on this but if you take a look it is all about the management of the available resources okay so in that case if you are a mechanical engineer definitely you have a scope to work in the field of SAP as well as in the field of ERP but you need to have there are there are many verticals उसमें बहुत सारे verticals हैं आप जब SAP की बात करते हैं तो वो verticals आपको सीखने पड़ेंगे वो सीखने के बाद आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और मैकेनिकल इंजीनियर को ज्यादा स्कोप मिलेगा क्योंकि आपकी मैकेनिकल इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी बन चुकी है ठीक है उसमें आपने बेसिक्स फंडामेंटल सीखे हुए हैं तो आपको वहां पे और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है yes hello sir polytechnic के बाद B or BTech see it doesn't matter B or BTech the thing which matters is your bachelor degree see this is the variation in the just which kind of organization it is some organization some universities are offering bachelor in engineering some are offering bachelor in technology it doesn't matter but the thing which really matters is during that education during that bachelor's what you have learned what technical skill you have adopted in you आपकी आपने आपके इंप्रूवमेंट कितनी हुई है टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की कितने स्किल सेट आपने इंप्रूव किए हैं वो मैटर करे चाहे बीई हो बीटेक हो ठीक है यस हेलो सर मेरा मैन ड्राफ्ट्समैन मशीन आईटीआई से हूँ व्हाट
आफ्टर ITI, ठीक है। ITI के बाद क्या करना है मैंने पहले ही बोल दिया है आपको। थोड़े से आपको टेक्निकल स्किल इंप्रूव करने पड़ेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज समझ, पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या क्या है वो पहले आपको पहचानना होगा, उसमें आप कहाँ तक पहुंचे हैं वो देखना होगा। और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, चाहे वो प्रोग्रामिंग स्किल हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर स्किल हो, वो कौन सी इंडस्ट्री में यूज ज्यादा होती है, कौन सी ज्यादा यूज करते हैं, उसमें मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर कुछ कुछ भी नहीं पहुंचा हूँ, कुछ भी नहीं किया है, तो आपको उसमें वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। वो सीखने के बाद मैं बोलूंगा आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल जाएगी। उसके लिए वो वैसे सर्टेन ट्रेनिंग आपको करने पड़ेंगे। ओके, नाइस स्पीक टू यू, थैंक यू, थैंक यू। Lunch time, okay, thank you. So I am also having next session. So Pratiksha ma'am, can we conclude please, because Yes, sir. Yes, sir. I have one more session, and definitely dear students, you will receive the feedback link, so you can have more question. I will interact in that also. Thank you very much one and all, thank you. Yes, thank you. Thanks to the Ashwin sir for this wonderful and interaction session. Thanks to the management of Brahma Valley College of Polytechnic, Nasik. Thanks to the principal, Professor VP Nikhde sir. Thanks to the HOD of Mechanical Department, Professor SB Wadje sir. HOD of the Electrical Department, Professor YS Thakre sir. And thanks again to the TPO Swapnil Gangurde sir. Thanks to the students also for their sessions. Thank you so much. Thanks to the whole management of Brahma Valley College of Polytechnic, Nasik. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको एक फीडबैक लिंक मिलेगी। वो फीडबैक लिंक आप फिल कर दो। और उसके बाद अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आप टाइप कर रहे थे बट ड्यू टू सम टाइम हम आंसर नहीं कर पाए, तो कोई भी क्वेश्चन है आप फीडबैक लिंक में वो शेयर कर सकते हो। आपको उसके आंसर मिलेंगे या फिर आप 1-to-1 आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा अश्विन सर के साथ। ठीक है, ओके, गुड लक, all the best for your future students, and sir, we conclude the session. Yes, I think sir leave because sir को कुछ next session है। ठीक है, तो आपको फीडबैक लिंक मिलेगा, आप फीडबैक फॉर्म जो है वो फिल अप कर देना। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय, टेक केयर, गुड डे।